So till yesterday, we have completed all the math function, text function, as well as the date functions. And we have seen the usage of some of the aggregate functions. So that means we know how to use a max function, min, avg, and sum also. अब ये जो 5 फंक्शन है, मैक्स, मिन, एवीजी, सम, काउंट, इन पांचों में से कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो न्यूमेरिक फील्ड पे वर्क करेंगे? Only out of these 5 which can be used, क्योंकि ब्रैकेट हम देंगे तो ब्रैकेट में we have to provide any one single field. That field can be your numeric field. Which function? बताओ. सम. ठीक है, और हम मैक्सिमम एवरेज. एवरेज भी कर सकते हैं, सम भी कर सकते हैं, मैक्सिमम भी यूज सारे कर सकते हैं. सारे कर सकते हैं. बोलो ना कि we can use all the functions to provide numeric field as an argument. ठीक है, सो आर्ग्यूमेंट में हम न्यूमेरिक फील्ड पांचों में दे सकते हैं. इन पांचों में से कौन सा फंक्शन ऐसा होगा जिसके अंदर कैर या वेर कैर वाली फील्ड एक्सेप्ट होगी? बताओ. काउंट. वेरी गुड. सो ओनली काउंट, नो अदर. हम मैक्स भी यूज नहीं कर सकते वेर कैर और वेर कैर फील्ड के लिए, ना मिन, ना एवीजी, ना सम. ओनली काउंट कैन बी यूज्ड. काउंट कैन बी यूज्ड विद एनी टाइप ऑफ द फील्ड. ठीक है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन विद द काउंट. ओके ओके. Out of these 5, which function can be used, function can be used if it has a data type of date? Which field can be used? ठीक है, मतलब अगर डेट हमारी फील्ड का टाइप डेट है तो कौन कौन से फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं? मैक्स, मिन और काउंट. Yes, very good. So we can only use 3 functions to provide date as an argument, date field as an argument. So that is max, min, and count. Okay, avg and sum, these are 2 functions which only can take numeric field as an argument. Otherwise max, min can take numeric or date field as an argument. Count can take any type of the argument. Okay, so ये clarity थोड़ी सी हुई. So yesterday we have learned how to find out the highest date, the lowest date, the maximum highest value or the minimum value, to how to find out the average of the numbers, how to find out the total of the numbers, and count can be used with any kind of the field. उसका data type चाहे कुछ भी हो, हम सारी fields को हम use कर सकते हैं. So count actually only counts the values in that field excluding null values. Okay, now let's see the usage of count and within parenthesis an asterisk sign. Okay, so if I show you the emp table, so we have this emp table. Okay, now एक second. Yeah, this is better. Okay, now you can see the table here. If I use select count and within parentheses a star, so this is one special function count in the aggregate functions which do not require any field to be provided. हमने max function देखा तो max में because it is a function so we have to provide an argument. Argument में हम सिर्फ उसको न्यूमेरिक या फिर डेट फील्ड प्रोवाइड करते हैं. तो फील्ड का नाम देना कंपलसरी है, मैक्स में भी, मिन में भी, सम में भी, एवीजी में भी. लेकिन काउंट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें किसी भी फील्ड का नाम देने की जरूरत नहीं है एज एन आर्गुमेंट, and you can only specify a star. So from, and then let's take m. So what it will do is it will actually count the records. So it will count the records. So there are 14 records. So it will give you as 14 as an output. So the output will be 14. ठीक है, but when we use select count और ब्रैकेट में किसी भी फील्ड का अगर हम नाम देते हैं इसमें, ठीक है, in that case it will count the values in that field excluding null.
or because this is a count can contain any field name, so we can provide emp and no. Also we can write ename, job, mgr, doj, sal, com, dpt, no, anyone. So if I for example write job, what it will return? Output क्या आएगा? I have written select count job within parenthesis as a job. This is an argument of the field from emp. What output will it display? Five. No. Count का काम क्या होता है? Counting करना values को ना? 14. 14. It will display 14. So it will count the values. So there are 14 values. That's all. Okay. Sorry. क्या हो गया? This मुझसे कोई बटन प्रेस हो गया. कोई बात नहीं. So you can see 14. Okay. So count may, whenever you provide any field name, so it will count the values in that field, excluding null. And count can also be used to count different values also, but that is not though in your syllabus. So the chances of getting that type of the question will be less, but still you should remember, we can see that. So select count, and within parenthesis, if we provide any field name, और उस field name से पहले अगर मैं लगा देता हूँ distinct, and then for example job, now it will count the different values, the distinct values in the job field. So distinct job का मतलब हो गया, it will count the different values in the job field. So we have clerk 1 as value, salesman second, third manager, fourth analyst, fifth president. तो जो प्रिया बोल रही थी 5, so वो तब output आएगा when you write the word distinct before any field. Otherwise it will count all the values. Okay, is that okay, Priya? Now it will display. Okay, sir. Yeah. So we have covered all the functions, all the aggregate functions also. Now let's learn something about a group by clause and a having. Okay, so we have already seen an order by. Order by is used to arrange your records in either ascending or descending order. Okay, let's see group by and having. Okay, so let's start with the group by first. So group by, please remember, group by can only be used when you use any grouping function. For example, if I use select an asterisk sign and then from M, now in this command or this query, this select command, I cannot use a group by. This will be invalid or wrong for me. तो ग्रुप बाय हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे? जब हमने select के बाद कोई grouping function इस्तेमाल किया है. And there are 5 grouping functions. You have already seen that: max, min, sum, avg and count. तो जब हम पांचों में से कोई ग्रुपिंग फंक्शन यूज करेंगे तभी हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज कर सकते हैं इसके अंदर. ठीक है. सो लेट्स सी, लेट्स टेक स्टार ओनली राइट नाउ. ओके, नाउ काउंट स्टार काउंट्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. ठीक है. नाउ इफ आई यूज ग्रुप बाय, दैट इज ओके, बट आफ्टर ग्रुप by are 2 different words, so you have to put first write group, then put a space and then write by. So these are 2 different words. Then group by के बाद आपको field का नाम mention करना है. So it can be any field. So we have these fields here: emp, no, ename, job, mgr, doj, sal, com, dpt, no. I can provide any field name. कोई भी field का नाम मैं दे सकता हूँ. Let's take dpt no, and then I'll explain कि किस तरीके का आउटपुट वो शो कर रहा है. फाइन. सो इफ आई जस्ट राइट dptno and then put a semicolon here, press enter, it will produce the output. Okay, but output अब आ रहा है 356. what are these 356? हमें समझ नहीं आ रहा कि 356 है क्या चीज. ओके, सो पहले ये लिखने का तरीका समझ लो. लिखने का तरीका समझ में आया कि ग्रुप बाय कब इस्तेमाल करना है? यस सर. जब आप कोई भी ग्रुपिंग फंक्शन यूज करोगे, इसका मतलब जब आप ये यूज करोगे मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शन, तब आप ग्रुप बाय नहीं लगा सकते.
जब आप कोई भी एग्रीगेट फंक्शन यूज करोगे, ओनली देन यू कैन यूज दिस क्लॉज, एंड दैट टू एट द एंड, मतलब लास्ट में. अगर वेयर लगाना तो वेयर भी लगा सकते हो, लेकिन लास्ट में ग्रुप बाय आएगा. ठीक है. नाउ ग्रुप बाय के बाद कोई भी फील्ड का नाम आ सकता है, आप कोई भी फील्ड लिख सकते हो, उस टेबल के अंदर होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए. So I have written here dptno, so it will produce an output, but what kind of the output is, you'll not abhi aapko samajh nahi aa raha hoga. Now let's see how this group by actually works. So when you use a group by and any field name, so aapne jaise dptno likha, so what it does is it goes to this particular table, is table mein wo aata hai aur iske accordingly grouping karna shuru kar deta hai. Because we have written a group by के बाद dptno, so it will group the records on the basis of dptno field. अब वो dptno के basis के पे group करने का मतलब क्या हुआ? In this case, it will see the values, the different values. So there's one value 20, there's another value 30, and there is another value 10. So you can see 3 values are there, 10, 20, 30. So 3 values हैं. Let's start with the 10 first. So it will group the records of the 10. तो कितने 10 हैं? Let's see, 1, 2 and 3. So उसने इस टेबल को एक तरह से ब्रेक कर दिया 3 ग्रुप्स में. एक ऐसा मतलब जिसमें डिपार्टमेंट नंबर 10 के सारे रिकॉर्ड्स हैं, एक ऐसा जिसके अंदर डिपार्टमेंट नंबर 20 के सारे रिकॉर्ड्स हैं. 20 में 1, 2, 3, 4, 5. सो ये 5 वाले जो है आपके डिपार्टमेंट नंबर 20 के हैं, एंड द रेस्ट वन जो 30 के हैं उनको अलग कर दिया. तो एक तरह से आप इस तरीके से समझ सकते हो कि क्लास में बच्चे इकट्ठे बैठे हुए हैं, मिक्स बैठे हुए हैं, बॉयज गर्ल्स एक साथ बैठे हुए हैं. अब मैं बोलता हूं कि यू हैव टू मेक अ ग्रुप अकॉर्डिंग टू बॉयज एंड गर्ल्स. तो बॉयज एक साथ चले जाएंगे, गर्ल्स अलग बैठ जाएंगे. तो मैंने उनको अलग से ग्रुपिंग कर दी, तो वो सेपरेट हो गए, ग्रुप्स क्रिएट हो गए उनके. सो दैट इज व्हाई हियर आल्सो the groups have been created, but those groups have been created on the basis of department number. वो ग्रुप्स बनने के बाद वो उनको काउंटिंग करता है. अब वो काउंटिंग उसने किया तो डिपार्टमेंट नंबर 10 में यू कैन सी देयर आर ओनली 3 रिकॉर्ड्स, सो इट डिस्प्लेड मी समथिंग लाइक 3. देन डिपार्टमेंट नंबर 20 में 5 रिकॉर्ड्स हैं, सो इट डिस्प्लेड मी 5. डिपार्टमेंट नंबर 30 में 6 रिकॉर्ड्स हैं, इट डिस्प्लेड मी 6. बट इट इज नॉट शोइंग मी द डिपार्टमेंट नंबर आल्सो. So I can write a command where the department number can also be displayed to me. So group by is nothing, but first it groups the records on the basis of the field that we specify, and then after that it will count the records. So it will execute this function only after it has been grouped according to this particular field that we provide. So if I also want to show the department number, so what I can do is I can write select dptno comma count star from emp, and then I can write group by dptno and a semicolon. Now please remember another rule. पहला रूल तो मैंने आपको ये बताया कि ग्रुप बाय तभी आप इस्तेमाल करोगे जब सेलेक्ट और फ्रॉम के बीच में आपने कोई ग्रुपिंग फंक्शन यूज किया है. इट कैन बी सम, इट कैन बी मैक्स, इट कैन बी मिन, इट कैन बी एवीजी, इट कैन बी काउंट. तभी आप ये ग्रुप बाय क्लॉज लगा सकते हो. ग्रुप बाय के बाद एक फील्ड का नाम आपका आना जरूरी है. दूसरा रूल ये है कि अगर आपने ग्रुप बाय लगाया है और उसके बाद किसी फील्ड का नाम आपने लिखा है, तो जो भी आपने ग्रुपिंग फंक्शन यूज किया है उससे पहले एक फील्ड आप प्रोवाइड कर सकते हो. यू हैव एन ऑप्शन टू प्रोवाइड दैट, एंड दैट कैन ओनली बी योर फील्ड नेम विच इज देयर आफ्टर दिस ग्रुप बाय. तो ग्रुप बाय के बाद अगर मैंने dptno लिखा है, देन सेलेक्ट और फ्रॉम के बीच में, सेलेक्ट और फ्रॉम के बीच में इट कैन ओनली बी द डिपार्टमेंट नंबर एंड देन द ग्रुपिंग फंक्शन. So ये हमारा allowed है. Otherwise you cannot use any other field name. If I press enter, now you can see the department number is also being displayed to me. ठीक है? But if I specify some another, I'll just copy this quickly and try to break it into multiple lines so that it is easier to understand. So if I just take the, oh sorry, I think I'll just take it to the next slide.
नहीं आ नहीं रहा है, I'll have to rewrite it again. Okay, select dptno, comma, let's take count star from m, then group by dptno. ठीक है, सो ग्रुप बाय के बाद जिस फील्ड का नाम है वही फील्ड यहाँ पे आ सकता है, अदरवाइज कोई फील्ड नहीं आ सकता है. ठीक है, इफ आई ट्राई टू चेंज दिस राइट नाउ, आई कैन नॉट गो बैक, आई जस्ट रीराइट माय कमांड अगेन. सो इंस्टेड ऑफ dptno कोई ऐसी फील्ड का नाम लिखता हूं जिसको मैं ग्रुप बाय के बाद नहीं लिख रहा हूं. लेट्स टेक anyone, empno, field name should be there. So if I take empno from here, let's take from emp, and then after that if I write group by dptno. Now if I press enter, it will show me the output, but ये output आपका गलत है. ठीक है, so this will produce a wrong output because you will see 7782. This 7782 will not be counted thrice. You cannot see 7782. अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 7782 काउंट करो कितनी बार आ रहा है. Can you count? One time. Only one. But उसके आगे 3 दिखा रहा है. तो आपका इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एरर, मतलब आउटपुट शो कर रहा है लेकिन वो आउटपुट गलत है. ठीक है, सो व्हेनेवर यू राइट अ ग्रुप बाय क्लॉज, तो ग्रुप बाय के बाद जो भी फील्ड होगा वही सेम फील्ड आप एग्रीगेट फंक्शन से पहले यूज कर सकते हो आफ्टर सेलेक्ट. इज दैट ओके? यस नो? यस सर. ठीक है, सो ये रूल समझ में आ गया आपको ग्रुप बाय का. ओके, now I'll show you the entire table again. Now I'm writing a command. You'll have to tell me the output, okay? I'll write it in the same line so that you can see the table also, okay? Okay, now what will be my output? जॉब कई बार आ गया ना, सेलेक्ट जॉब कॉम अकाउंट जॉब फ्रॉम ग्रुप फ्रॉम एम्प ग्रुप बाय जॉब. यस, किसी को नहीं आता इसका आउटपुट? स्नेहा, कैन यू ट्राई? सर जॉब में मतलब वो सारे शो करेगा, क्लर्क, सेल्समैन, मैनेजर, ये सब. और काउंट जॉब में वो 5 मतलब क्लर्क के जितने होंगे ना उतने शो करेगा. वेरी गुड. सो फर्स्ट इट विल डिस्प्ले के क्लर्क. 4 हैं. क्लर्क के आगे 4. वेरी गुड, शाबाश. सो क्लर्क के आगे इट विल शो 4. देन सेल्समैन, इट विल शो सेल्समैन कितने हैं? आई थिंक इट इज अगेन 4 या 4. देन अगेन मैनेजर, इट विल डिस्प्ले 3 आई थिंक, if I'm not wrong. Yes sir. Yeah. Then after that analyst, so it will display 2. Very good, shabash. Yeah. So सबको समझ में आई ये बात? So it will display job. Okay. So now again जैसे रूल वही है, ग्रुप बाय जॉब, तो पहले ग्रुप करो. जब मैंने लिखा ना ग्रुप बाय जॉब, तो फर्स्ट इट विल ग्रुप. सो ग्रुप करेगा तो सबसे पहले क्लर्क वाले रिकॉर्ड्स अलग कर लो. ठीक है, तो आउटपुट में जस्ट राइट क्लर्क. It is displaying in the alphabetical order of the job. You can write it in any order. वो आपका गलत नहीं होगा एग्जाम में क्वेश्चन. ठीक है, सो वो आपका क्लर्क आपने अलग कर लिया, एनालिस्ट अलग कर लिया, मैनेजर, प्रेसिडेंट, सेल्समैन. Then after that execute this function. Now if you execute this function, just count the values of the job. So even if you put a star here, still it will display the same output. कोई इसमें फर्क नहीं आएगा. You can put an asterisk sign or you can put job. ठीक है, is that okay? Yes sir. ठीक है. So I hope this is clear to you. So
मतलब रूल, जब भी कैलकुलेशन करना, आउटपुट निकालना, फर्स्ट रिकॉर्ड्स को अलग कर लेना, then just write the name of those values here, and then after that do the whatever aggregate or grouping function it's being written here, उसको फिर कैलकुलेशन करो, काउंटिंग करना है या मैक्सिमम निकालना है या मिनिमम निकालना है या एवरेज निकालना है या टोटल निकालना है, whatever. So just do that, and जो भी आपका ब्रैकेट में दिया हुआ है on the basis of that field. Simple. First group by करना है, then after that you have to do this particular task. Okay. और and that too for every group separately. जितने ग्रुप आपके बने उस फील्ड के अकॉर्डिंगली सबका अलग अलग निकालना है. ठीक है. जब हम ग्रुपिंग नहीं करते थे तो सबका इकट्ठा निकालता था. जब हम ग्रुपिंग कर देते हैं तो जिस फील्ड के अकॉर्डिंगली हमने ग्रुपिंग की है तो सबका अलग अलग वो कैलकुलेशन करेगा, सबको अलग अलग काउंटिंग करेगा. नाउ इट इज काउंटिंग, यू कैन सी 5 टाइम्स. एनालिस्ट को अलग काउंट कर रहा है, क्लर्क को अलग, मैनेजर को अलग, एंड सो ऑन. ठीक है. Now I hope this is clear, group by. Let's move on to the last one, that is a having, and after that your syllabus for MySQL will be finished. Then we'll be ready to solve some of the questions. Okay. Now again, having can only be used whenever you use a grouping function. तो जैसे group by के लिए रूल था कि जब आप कोई grouping function या aggregate function use करते हो, that is max, min, avg, count, when you use only these 5 functions, only then you can use this having clause in your select command. Otherwise, if you use any of these math, text, or date functions, you'll not be able to use a having here. Having is normally used to put a condition on your grouping function. That is, if I want to find out, okay, let's take the maximum salary. Okay, I want to find out the maximum salary of all the jobs. मैं देखना चाहता हूँ एनालिस्ट में सबसे ज्यादा सैलरी कितनी मिल रही है, क्लर्क में सबसे ज्यादा सैलरी कितनी मिल रही है. So for that I'll be writing a command select job, because I'll be grouping the records on the basis of job. मैंने बोला एनालिस्ट को मैक्सिमम सैलरी कितनी मिल रही है, बट जो मैं फंक्शन यूज करूंगा I'll use max, और मैं सैलरी निकालना चाहता हूँ मैक्सिमम. So I'll use sal, okay, from emp, and then group by, let's take job only. Now you can see that the analyst को सबसे ज्यादा सैलरी मिल रही है 15,000, क्लर्क को सबसे ज्यादा सैलरी मिल रही है 16,100, and manager and so on. Now I want to further write a command or write a query where I want to know कि 15,000 से ज्यादा, ठीक है, let's take not 15,000, 16,000 से ज्यादा किस किस को सैलरी मिल रही है. एनालिस्ट को कौन सी जॉब्स को 16,000 से ज्यादा सैलरी मिल रही है. अब मैं यहाँ पे मैक्सिमम भी फाइंड आउट कर रहा हूं. ठीक है. आई वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम सैलरी आल्सो, एंड आई एम आल्सो पुटिंग अ कंडीशन कि वो 16,000 से ज्यादा होना चाहिए आउटपुट में. राइट नाउ इट विल डिस्प्ले ऑल द हाईएस्ट सैलरी ऑफ ऑल द जॉब्स, बट आई वांट टू नो द जॉब्स वेयर द मैक्सिमम सैलरी इज more than 16,000. So in that case, I am putting a condition on max salary. So I am putting कि जिसकी max salary 16,000 से ज्यादा है. तो जब भी आप इसके ऊपर कंडीशन लगाना चाहते हो max sal के ऊपर, then in that case you will be using a having clause. So let's take an example here. The same command will be written. Okay, sal from emp. Okay, then group by job only. After that, उसके बाद लास्ट में you can put a having clause, and having clause में you can put a condition on either this one or this one. So we'll be using max sal, because जैसे मैंने बोला having जो होगा वो आपका grouping function पे condition लगाने के लिए होता है. So I can specify here max sal greater than 16,000 and put a semicolon. Now if I press enter, output is being displayed to me, but उसमें जो 16,000 से कम थे रिकॉर्ड्स ऊपर में, it is not displaying those records. So it is only displaying those jobs where the maximum salary is more than 16,000. So if you are going to put a condition on this particular function, aggregate function, then you can use a having clause here. So is that okay?
नहीं समझ में आया? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. यस सर. हाँ, दोबारा रिपीट करूँ एक बार और दूसरा एग्जांपल लेके? हाँ. ठीक है. ओके, लेट्स टेक दैट कि डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 30 में, मतलब जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कितने लोग काम करते हैं. आई वांट टू नो दैट. सो आई विल राइट फॉर एग्जांपल select dptno comma count star. Okay, I'll break it from emp group by dptno. Okay, but I only want to view the record जिसमें कि 5 या 5 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं. कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट नंबर्स हैं जिनमें 5 या 5 से ज्यादा लोग काम करते हैं. सो इन दैट केस आई एम पुटिंग, मैं काउंटिंग तो कर ही रहा हूं ना, काउंटिंग तो कर ही रहा हूं मैं. सो I'll put a condition on that count star only. So I'll put count an asterisk sign and then put a condition here greater than equal to 5. So whenever you are writing a command that has some aggregate function being used, and if you want to put a condition on that same aggregate function, then you can use this having clause. That is the main purpose of this having clause. So having clause is used to put a condition on the aggregate function. So अगर मैं ये नहीं लगाता हूं तो वो सारे डिपार्टमेंट नंबर शो करेगा जिनका इसने ग्रुपिंग किया है 10, 20, 30, और तीनों के बता देगा कि भाई 10 में कितने काम करते हैं, 20 में कितने, 30 में कितने हैं. लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट नंबर में 5 या 5 से ज्यादा लोग काम करते हैं. तो मुझे काउंटिंग तो करनी है, लेकिन I want to only view the records of the department numbers where the total number of employees is more than or equal to 5. So if I now press enter, so it is only department number 20 and 30. 10 इसने मुझे शो नहीं किया because उसके लिए क्राइटेरिया ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है. आपको समझ में आया? सर. हाँ बोलो. तो अगर जैसे वो मैक्स वाला है उसमें हैविंग मैक्स ऐड लिखना जरूरी है वरना वो रॉन्ग हो जाएगा. हाँ बिल्कुल. हैविंग जो होता है वो वेयर की तरह ही है. हैविंग इज सिमिलर टू योर वेयर. वेयर में के बाद भी कंडीशन लगाते हैं ना, तो हैविंग के बाद भी कंडीशन लगा रहे हैं. लेकिन नॉर्मली हैविंग जो यूज होता है, मेन पर्पस हैविंग लगाने का होता है, वो होता है आपका किसी ग्रुपिंग फंक्शन पे. जो हमने फंक्शन यूज किया है यहाँ पे मैक्स सेल यूज किया है, देन वी हैव टू यूज मैक्स सेल ओनली. ओके, सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग दिस हैविंग. अदरवाइज हम नॉर्मल वेयर के साथ भी काम कर सकते थे. तो फ्रॉम के बाद एम्प लगाया, यहाँ पे वेयर लिख सकते थे ग्रुप बाय से पहले. लेकिन वेयर जो होता है वो नॉर्मल कंडीशंस लगाने के लिए होता है कि जैसे जिसकी जॉब क्लर्क है या जिसकी जॉब सेल्समैन है, वो उनके ऊपर कंडीशंस लगाने के लिए. बट अगर आप इस कैलकुलेशन के बेसिस पे कंडीशन लगाना चाहते हो, देन यू यूज अ हैविंग क्लॉज. अब थोड़ा क्लियर हुआ प्रिया? यस सर. हाँ ठीक है. सो ऑर्डर याद रखना, हैविंग शुड बी एट द एंड ऑफ योर सेलेक्ट कमांड एंड उससे पहले आप ग्रुप बाय लगा सकते हो. ग्रुप बाय के बाद जो भी आप फील्ड का नाम आप लिख रहे हो, ठीक है, ओनली दैट फील्ड कैन बी यूज्ड हियर. सो and group by can only be used when you use any aggregate function. So it can be sum, max, min, avg, anything, count. And again having के बाद भी आप एक grouping function use करते हो. लेकिन normally having जैसे मैंने बोला where की तरह है, तो जरूरी नहीं है कि आपका यहाँ पे कंडीशन जो हो वो सिर्फ आपके किसी एग्रीगेट फंक्शंस पे ही हो. हैविंग के बाद आप नॉर्मली वेयर वाला कंडीशन भी लगा सकते हो. जैसे कि यू कैन राइट समथिंग लाइक select dptno comma count star. Okay, from emp I want to know कि डिपार्टमेंट नंबर 30 में कितने लोग काम करते हैं. ठीक है, मैंने एक कंडीशन लगाई डिपार्टमेंट नंबर 30. मैं अब इसके ऊपर जा ही नहीं रहा हूं कि किस डिपार्टमेंट में 5 या 5 से ज्यादा लोग काम करते हैं. मैं कह रहा हूं डिपार्टमेंट नंबर 30 में कितने लोग काम करते हैं. तो इफ आई जस्ट स्पेसिफाई हियर ग्रुप बाय dptno, and then after that if I put having dptno equal to 30, so ये where की तरह ही हो गया exactly. If I now press enter, still it will work.
So having and where almost same तरीके से काम करते हैं, लेकिन having can only be used when you use any grouping function. ये नहीं है कि नॉर्मल सेलेक्ट कमांड में भी आप having लगा दोगे, नहीं, वो गलत हो जाएगा. ठीक है. So having can only be used when you use any grouping function, but normal condition can also be added when you use a having clause. ठीक है. So ये भी आपका क्लियर हो गया. Okay, so are we ready to solve the questions? Yes, no, हाँ, ना. कोई डाउट है, पूछना चाहते हो? स्नेहा, प्रिया, तान्या. यस सर. क्वेश्चंस करें क्या, या और कुछ इसमें पूछना चाहते हो आप? कल जो आपने पढ़ाया था उसके भी क्वेश्चंस पूछेंगे. हाँ, वो पूरा MySQL, कंप्लीट MySQL, जितना MySQL हमारा हो गया. ठीक है. सो वी हैव फिनिश्ड द एंटायर सिलेबस ऑफ MySQL. ओके. जो मैंने सैंपल पेपर अभी देखा है, तो उसमें नॉर्मली जो आपका ये है मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शंस, ग्रुप बाय, हैविंग एंड ऑर्डर बाय, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं. सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था, जैसे कि मान लो रिकॉर्ड्स को आपको चेंज करना है, तो कौन सा कमांड यूज करोगे? अपडेट. ओनली 1 मार्क क्वेश्चन वाज देयर व्हिच वाज आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, जो 11th का पोर्शन बन जाता है एक तरह से. ठीक है. सो बहुत सिंपल क्वेश्चन था वो. खैर, so we'll be covering all those questions. So I've prepared those questions for you. Yeah, so you might have attempted all these questions also. Sare nahi, but some of the questions you might have attempted in your pre-board 1 exam. ठीक है. So we'll try to term 1 also, and even your pre-board also. ठीक है. So can we start? Yes, sir. और इसमें MySQL के अभी कुछ कम ही है questions. After that, I'll be giving more of the questions so that you can practice more of MySQL questions. Otherwise, networking और societal impacts के तो मैंने जितने आपको questions practice करवाए हैं, that is more than enough. You can revise through that question bank. लेकिन MySQL के लिए you need a lot of practice. ठीक है. So I'll be giving you more of the questions. But right now, these all are questions from the sample paper. ठीक है. So you'll get a confidence कि ये तो सारे question हमें आते हैं, so it is very easy to score marks. Okay. So write the output of the following SQL command. Let's start. Select round 49.88. Okay. Math function है. एक ही argument दिया हुआ है. Second argument is missing. So that means there will be no decimal after digit. Decimal के बाद कोई digit नहीं होगा, इसका मतलब. So कौन सा output होगा? 50. Simple. Okay. The answer is 50. I'll keep on writing also. Yeah. Next question is just copy this. Next question is the AVG function in MySQL is an example of math, text, date, or aggregate. 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 Yeah, that's correct. So this is aggregate function. So आपके 4 क्वेश्चन इसमें एक नंबर के क्वेश्चन थे. ठीक है. The dash command can be used to make changes in the rows of the table in SQL. किस कमांड से आप रिकॉर्ड्स को चेंज कर सकते हो? Update. Update. Very good. Yes. Okay. Next question. Write the SQL command that will display the current date and time. आज की डेट और टाइम देखनी है तो कौन सा फंक्शन यूज करूंगा मैं? The now parenthesis. Now, opening closing parenthesis. So you can write the, because if they're saying write the SQL command, है ना? So now लिखने से काम नहीं चलेगा. So you can write select now opening closing parenthesis and a semicolon. Okay, fine. Consider the table student given below. So can you see the table here? The name of the table is student. It has 6 fields, 6 to 7 fields, sorry, 7 fields. Roll and no, name, class, DOB, gender, city, marks.
Now state the command that will give the output as. So I'll just decrease the size bit. थोड़ा सा कम कर देता हूँ. Yeah. Now is it visible to you? The question as well as the table. Yes sir. ठीक है. अब मुझे बताओ कि ये टेबल है तो कौन सा कमांड लिखना पड़ेगा. डोंट सी द ऑप्शंस हियर. अच्छा ऑप्शंस देखने पड़ेंगे लेकिन ठीक है, because there are different ways to write this command to get this output. So हमें ये आउटपुट चाहिए आनंद, चेतन, गीत और प्रीति. आनंद, चेतन, गीत, प्रीति. ठीक है. The first option is, अगर हम कमांड लिखते हैं select name from student where class is equal to 11 and class is equal to 12. क्या ये कमांड सही है? इससे क्या ये वाला आउटपुट आएगा? ये वाला आउटपुट आएगा? नो सर. नहीं आएगा बिकॉज एंड लगा हुआ है. एंड में तो एम्प्टी सेट आ जाएगा क्योंकि एंड के केस में इट विल ट्राई टू चेक कि 11 और 12 दोनों क्लास होनी चाहिए तभी वो शो करेगा बच्चे का नाम. तो दैट्स नॉट पॉसिबल. सो इट विल शो एन एम्प्टी सेट. तो ये आपको आपने इसको कट कर दिया. ओके. सेकंड कमांड, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नॉट क्लास इक्वल टू 11 एंड क्लास इक्वल टू 12. Wrong. नो. एंड अगेन लगा हुआ है, एंड भी लगा हुआ है, नॉट भी लगा रखा है, तो वो भी नहीं पॉसिबल है. ओके फाइन. सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज इक्वल टू आगरा और सिटी इज इक्वल टू मुंबई. ओके लेट्स सी द सिटी. और लगा हुआ है. ठीक है, दैट इज ओके. आगरा आनंद, मुंबई चेतन. ठीक है, सही शो करेगा. देन आगरा गीत. ओके. देन मुंबई प्रीति शो करेगा. देन दिल्ली 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 मॉस्को मॉस्को नहीं. इससे मेरे ख्याल से आउटपुट आ जाएगा बिकॉज सेलेक्ट नेम भी शो कर रहा है, खाली नाम शो कर रहा है, और सिटी और आगरा और मुंबई ये चारों के लिए ट्रू हो रहा है. सो सही है ये कमांड या नहीं है? सही है सर. सही है. Yes, sir. ओके फाइन. सो अब फोर्थ वाला भी देख लेते हैं क्योंकि लिखा हुआ स्टेट द कमांड दैट विल गिव द आउटपुट एज. ओके लेट्स सी द फोर्थ वन आल्सो. सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इन Agra, Mumbai. I think this is also okay because this command and this command is the same command. हम लोगों ने स्टडी किया था ना कि आप और लगा के जो कमांड लिखते हो वो इन से भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो. Yes. Yeah, so third and the fourth one are the same command, but they are written in different ways. So choose the correct option. The correct option 3 and 4 है. So this is the correct answer. समझ में आ गया? Yes sir. ठीक है. Now what will be the output of the following command? Select star. Okay. So अभी options दिए हुए हैं but let's try to do it ourselves because asterisk sign लगा हुआ है. Then it will display all the 7 fields. Asterisk sign का मतलब हो गया it will display all the fields from student. Okay. Where gender is equal to F. So let's see the gender F. So we have गीत, but उसके आगे भी पढ़ लेते हैं. ऑर्डर बाय मार्क्स. सो मतलब कि जितने भी फीमेल इसमें स्टूडेंट हैं उनका रिकॉर्ड शो करेगा. सो फीमेल इज गीत, प्रीति, and then Makhi and then Neha. So these are 4 students. And then it will display in the ascending order of the marks because it shows order by marks, लेकिन उसके आगे DSC नहीं लगा हुआ है. So order by marks में ascending order में शो करेगा. तो इन 4 लड़कियों में सबसे कम मार्क्स किसके हैं सबसे पहले उसका ऊपर रिकॉर्ड दिखाएगा. सो दैट इज आई थिंक मैकी, दैट इज 256, देन 324. डिफॉल्ट होता है क्या? क्या? हाँ, अगर आप ऑर्डर बाय के बाद फील्ड का नाम लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट इट इज ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर. बट इफ यू हैव टू पुट इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर तो ऑर्डर बाय फील्ड का नाम उसके आगे एक चीज लिखनी पड़ेगी DESC. ओनली देन इट विल शो द रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. So that means Makhi पहला रिकॉर्ड आएगा. अब let's see the output here. So 4 ये आ रहा है, ये गलत है. क्यों? अरेंज नहीं है प्रॉपरली ना. So A is not the correct one. I think B is the correct one because you can see only 4 students have been displayed here. सारे रिकॉर्ड शो, सारे फील्ड शो कर रहा है, 7 के 7 फील्ड्स, एंड देन असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं मार्क्स भी. तो B is the correct one. C गलत हो जाएगा क्योंकि स्टार हमने लिखा हुआ है वहां पे. तो एस्ट्रिक साइन के बेसिस पे तो 7 फील्ड शो करने चाहिए, यहाँ पे 2 ही कर रहा है, यहाँ पे भी 2 कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन इज B1. इज दैट ओके?
Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, question number 3. Prachi has given the following command to obtain the highest marks. So she has written the following command. Select max marks from student where and then group by class. But she is not getting the desired result. ये कमांड ही गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि where के बाद कंडीशन ही नहीं है. ओके. नाउ ऊपर से ग्रुप बाय इसने क्लास किया हुआ है. तो अगर ग्रुप बाय क्लास किया है दैट्स ओके. अगर क्लास फील्ड है then we can put the class here also. That will be better. Otherwise we'll be able to see the maximum marks, but हमें कौन सी क्लास कहाँ है वो पता नहीं चलेगा. But she is not getting the desired result. Help her by writing the correct command. तो एक तो where डिलीट हो गया और यहाँ पे क्लास लग गया. लेट्स सी कि कौन सा सही है. यहाँ पे क्लास नहीं है, इसको छोड़ दो. यहाँ पे क्लास है, ये सही है. तीनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन उसमें ग्रुप बाय आपका क्लास होना चाहिए. सो दैट इज आई थिंक फोर्थ वन, दैट इज डी वाला. क्योंकि सी में ग्रुप बाय पहले लगा दिया, बट ऑर्डर है सेलेक्ट फ्रॉम, उसके बाद वेयर आएगा, उसके बाद आपका ग्रुप बाय, उसके बाद हैविंग. तो ये ऑर्डर है. सो डी इज द करेक्ट वन. ये समझ में आया कैसे? यस सर. ठीक है. ओके. नाउ लेट्स सी द फोर्थ वन. State the command to display the average marks scored by students of each gender. Each gender जब लिखा हुआ है ना, हमें एवरेज मार्क्स निकालना है ईच जेंडर. सो उस केस में ऑर्डर बाय और जेंडर हो जाएगा. ठीक. सो ग्रुप बाय जेंडर्स, नॉट ऑर्डर बाय, सॉरी. सो ईच जेंडर, सो दैट विल बी ग्रुप बाय जेंडर. हु आर इन क्लास 11th. तो ये जो क्लास 11th है हैविंग के बाद भी लग सकता है और वेयर के साथ भी लग सकता है. Okay, where class is equal to 11 is also okay, and having class equal to 11 is also okay. ठीक है. So group by gender, can you see this? तो each gender हो रहा है, सही है. यहां पे देखते हैं select gender, AVG marks, ये भी बिल्कुल ठीक है. From student where class is equal to 11, I think one is okay. इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक कमांड है. If we come to the second one, it says where आपका बाद में लगा दिया, तो ऑर्डर ये गड़बड़ हो गया. If अगर where लगाना है तो ग्रुप बाय से पहले लगेगा. ठीक है. तो ये सेकेंड इज अ रॉन्ग कमांड. If we come to the third one, select gender, AVG marks, group by gender from, ये from पहले आना चाहिए, ग्रुप बाय बाद में आना चाहिए. थर्ड वाला भी गलत है. फोर्थ देखते हैं. select gender, AVG marks from student, ठीक है. ग्रुप बाय जेंडर, ठीक है. Having class is equal to 11 is also okay. So which two commands are okay? 1 and 4. 1 and 4. Yeah. So in this case, सर नहीं है ऑप्शन. सर सेकंड एंड 4. नहीं, बट वेयर जो होगा इसमें गलत दिया हुआ है. मेरे हिसाब से तो गलत है. Because you cannot use where after group by. You can see that here. अभी हम लोगों ने जैसे ग्रुप बाय लिखा हुआ है ना, I'll write the same command और where मैं बाद में लगाता हूँ. ठीक है. क्लास कितने बजे तक है? 3 बजे. मेरी 10th की भी है यार, 3 तक है. सर अब 3 एरर आ रहा है. अरे 10th का भी प्री बोर्ड और 12th का एक साथ रख दिया ना इन्होंने. अब एक ही टीचर पढ़ाने वाला, इनको कौन समझाए? वो दूसरे सर लोग नहीं पढ़ाते, करुण सर वो सब. नहीं, 10th को तो मैं ही लेता हूँ ना, बोर्ड वाली क्लासेस को मैं ही लेता हूँ. ओके. सो यू कैन सी वेयर, अगर हम ग्रुप बाय के बाद वेयर लगाते हैं तो ये एरर है, गलत है. ठीक है. तो अगर यहाँ पे ऑप्शन है भी और अगर बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाता है, प्लीज रेक्टिफाई दैट. प्लीज टेल देम कि ऑप्शन नंबर 1, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर 1 and option number 4 is the correct one, which is not there. But 2 and 4 will not serve your purpose. 2 is wrong. Where आप बाद में नहीं लगा सकते क्योंकि ऑर्डर चेंज हो गया.
अब इसी कमांड को अगर मैं यहाँ पे वेयर जो है अगर मैं ग्रुप बाय से पहले लगा देता हूं, मेरा कमांड एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, सो यू हैव सीन दैट प्रैक्टिकली। Now if I put a where here, now this is okay. And group by बाद में लगाना है। तो ये कुछ ऑर्डर्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। Now this is okay. समझ में आया? Yes sir. तो बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो क्या करोगे आप? तो यू विल से द करेक्ट चॉइसेस आर चॉइस नंबर 1 and 4, ठीक है, which is not mentioned in the correct options, ठीक है, but 1 and 4 are the correct options. Okay, fifth one is help Ritesh to write the command to display the name of the youngest student, not the oldest one, eldest one नहीं, youngest one. ठीक है, मतलब जो सबसे बाद में पैदा हुआ है वो सबसे यंगेस्ट ही तो होगा ना, उसकी सबसे कम उम्र होगी। तो जो सबसे बाद में पैदा हुआ है तो उसका हम मैक्सिमम निकालेंगे तभी तो पता चलेगा। तो दैट मीन्स इफ यू कैन सी दिस, मैक्स इज हियर, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज हियर, सो वो एक ही ऑप्शन में है मैक्स फंक्शन, सो दिस वन इज द करेक्ट वन। आया समझ में? सर कैसे नहीं समझ आया? नहीं समझ में आया, ओके। इसमें हम ये देखते हैं, इफ यू सी द एम टेबल हियर, बिकॉज आई डोंट हैव दैट स्टूडेंट टेबल हियर, एम टेबल है, मैं देखना चाहता हूं कि सबसे लास्ट में किसने ज्वाइन किया है। ये 14 एम्प्लॉइज हैं, सबसे लास्ट में किसने ज्वाइन किया है, तो मैं कौन सी डेट फाइंड आउट करूंगा, मिनिमम डेट या मैक्सिमम डेट? बताओ प्रियंका। मैक्सिमम डेट। मैक्सिमम डेट, वही चीज वहां पे है कि सबसे यंगेस्ट कौन है, तो यंगेस्ट मतलब जो सबसे बाद में पैदा हुआ है, तो मैक्सिमम। बट उसकी एज तो कम होगी ना? एज, हाँ, तो तभी तो यंगेस्ट है, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा। तो उस टेबल में ग्रुप लाइक एज वाइज सेटिंग नहीं है क्या? क्या नहीं, ये टेबल है ना, इसमें जो सबसे बाद में पैदा हुआ है वही तो यंगेस्ट होगा। कहाँ गया टेबल? ये अच्छा, हाँ, नहीं समझ में आया? तो यहाँ पर डीओबी करके, अच्छा हाँ, डीओबी का सबसे मैक्स वाला। हाँ, ठीक है। यस हाँ, यस तो मैंने बोला कि मेन चीज है कि यंगेस्ट लिखा हुआ है तो मैक्स फंक्शन यूज करना है, तो मैक्स फंक्शन सिर्फ एक ही जगह पे है और कहीं है ही नहीं। यस यहाँ पे मिन है, यहाँ पे मिन है, ये मैक्सिमम है, ये वैसा कोई फंक्शन ही नहीं होता। अब समझ में आया कुछ? यस। हाँ, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, नाउ आई कैन जस्ट जूम इट, या स्टेट एनी टू डिफरेंस बिटवीन सिंगल रो फंक्शन एंड अ मल्टीपल रो फंक्शन। दो डिफरेंस बताने हैं सिंगल रो फंक्शन और मल्टीपल रो फंक्शंस में, बताओ। क्विकली। बताओ सिंगल रो फंक्शन में। नहीं याद आ रहा? नहीं। ये ठीक है। ये भी लिख सकते, मतलब ये तो एग्जांपल्स हो गए ना, चाहे कुछ भी है, ठीक है ना। से एग्जांपल्स के भी मार्क्स मिलते हैं? भाई आपको डिफरेंस बताना है, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है। एंड देन सिंगल रो फंक्शंस कैन रन इवन विदाउट फ्रॉम क्लॉज, ठीक है। बट फॉर मल्टीपल रो फंक्शंस यू हैव टू यूज अ टेबल।
Yes, sir. Is this okay? Yes, sir. ठीक है. So I'll just make it in red color. Okay. Next question is, what is the difference between order by and group by? When used along with the select statement, explain with an example. So you have to write the difference between group by and order by. बताओ. ग्रुप बाय किस लिए यूज होता है पहले वो बताओ, फिर एग्जांपल लिखेंगे. असेंडिंग या डिसेंडिंग में लाइक समथिंग. नहीं, वो तो ऑर्डर बाय होता है. Sir, it helps in grouping on the basis of specific area. Specific field, you can say. Yeah. So groups the records on the basis of field and then does or finds max, or you can say min or AVG or sum or count. Okay. Then order by arranges the record, or we cannot say arranges, so you can say displays records in ascending or descending order. Okay. Now example, so you can write an example here. So select, for example, आपने अभी M table किया है तो M table का एक example लिख सकते हो आप. जरूरी नहीं है M का, स्टूडेंट का, जो आपके मन में आता है. ऊपर स्टूडेंट टेबल दिया हुआ है, टेबल जरूर होगा बोर्ड के पेपर में, वो टेबल को यूज करके आप एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो. सो जैसे यहाँ पे इन्होंने कमांड लिखा हुआ है ग्रुप बाय का, जस्ट यूज दिस. तो बी स्मार्ट है ना, सो यू कैन यूज दिस एज एन एग्जाम्पल. सो एंड बट यहाँ पे अभी ग्रुप बाय नहीं लगा हुआ है, सो विल इवन डू दैट ऑल्सो. सो यू कैन राइट सेलेक्ट नेम कॉमा and then instead of this name you can use a gender here. Okay, and then after that you can use group by gender. हो गया एग्जाम्पल. और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा select star from student, same table. Okay, and then order by and then any fields, for example name, तो alphabetical order में लगा देगा name wise. That's all. आया समझ में? नहीं आया? Yes, sir. हाँ. सो एग्जाम्पल्स बहुत आसानी से MySQL में मिल जाएंगे. पेपर में 2-3 टेबल्स होंगे, यू कैन यूज एनी ऑफ दोज टेबल्स. ठीक है, टू राइट योर आंसर. ओके, नेक्स्ट इज consider the decimal number x with a value something like this. Write command in SQL to round it off to a whole number. whole number मतलब डेसिमल के बाद एक भी डिजिट नहीं होना चाहिए. इसके लिए क्या कमांड लिखेंगे फर्स्ट वाले के लिए? So we'll write select. Okay, we'll write round, then we can use this as a number directly. उन्होंने x लिखा है, उसकी जरूरत नहीं है, सिंपल हो गया. कॉमा हमने नहीं लगाया तो डेसिमल के बाद एक भी डिजिट नहीं होगा. फाइन. देन सेकंड वन इज सेलेक्ट round it to two places before the decimal. तो डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हमें हटाने हैं. ठीक है, सो इन दैट केस विल यूज सेलेक्ट राउंड. फर्स्ट राउंड के अंदर वैल्यू आ जाएगी, कॉमा के बाद क्या आएगा? डेसिमल से पहले हटाने हैं तो सेकेंड आर्गुमेंट क्या लिखा? -2. या वेरी गुड. और डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट्स रखनी होती तो +2, दैट इज ओनली खाली 2 लिखना होता आपको. ओके, समझ में आया? इजी ना? Yes. Yes. हाँ, ठीक है. Next question is Anjali writes the following commands with respect to a table employee having fields MNO, name, department, commission. उसने पहला कमांड लिखा select count star from employee. So what it will do, it will count the records. Second उसने कमांड लिखा select count commission from employee. She gets the output as 4 for the first command, but she gets an output of 3 for the second command. दूसरे कमांड के लिए 3 आ रहा है, फर्स्ट कमांड के लिए 4 आ रहा है. Explain the output with justification. So you can write how many records are there?
कितने रिकॉर्ड्स हैं टेबल में? 4 सर, 4 रिकॉर्ड्स है ना? 4. So there are 4 records, but only 3 values in the commission field. तो कमीशन जो फील्ड है, या तो एक क्वेश्चन समझा दीजिए फिर से। उसने 2 कमांड दिए हैं। पहला कमांड दिया सेलेक्ट काउंट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय, दूसरा कमांड दिया उसने सेलेक्ट काउंट, ब्रैकेट में इंस्टेड ऑफ एन एस्टेरिस्क साइन शी स्पेसिफाइड कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय. For the first command she get an output of 4, but for the second command she get an output of 3. Why these दोनों अलग अलग आउटपुट क्यों आ रहे हैं? So because there are 4 records but only 3 values in the commission field, and one of the commission value is null. तो एक अगर नल होगा तो उसको काउंट नहीं करेगा, इस वजह से दोनों का अलग अलग आउटपुट आ रहा है. So this is your answer. Okay. Now consider the following SQL string preoccupied and write the command to display occupied. खाली हमें occupied display करना है. तो starting from this letter, so you can use either mid आप use कर सकते हो, substring, subster आप write भी use कर सकते हो. तो 3-4 मतलब ये आपके कोई भी फंक्शन आप यूज कर सकते हो. ठीक है. तो अगर आप मिड यूज करते हो तो यू कैन राइट सेलेक्ट मिड, ब्रैकेट में पहले आप आर्ग्यूमेंट दोगे, ओके, देन कॉमा करके आप स्टार्टिंग पोजीशन क्या लिखोगे यहाँ पे सेकेंड आर्ग्यूमेंट में? 4. सो ओ से शुरू करना है और फिर हमें कॉमा करके दोबारा नहीं बताना कितने फेच करने हैं. इट विल एक्सट्रैक्ट टिल द एंड. सो टू स्टार्ट फ्रॉम 4th कैरेक्टर and extract till the end of your string. So this is also okay. You can even use write also. तो write में आपको count करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 I think ना 3 4 5 6 7 या 8. तो अगर आप write यूज करते हो तो यहाँ पे argument हो जाएगा 8. तो write के 8 characters हो. Any one of that will be okay. कब show करना है? Select again you can use mid or substring also. Substring, subster एक ही फंक्शन है ये सारे. ठीक है. ब्रैकेट में preoccupied ही रहेगा. सर 6 होगा ना? कॉमा स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी पहले ये बताओ. कब स्टार्टिंग पोजीशन 6. ओके, कैन वी सी दैट? 1 2 3 4 5 6. ओके 6. एंड कितने कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं? 3 करने हैं. तो हम लोग यहाँ पे कॉमा करके 3 लिख देंगे. सो दिस इज ओके. आया समझ में? ओके. सो आई थिंक 10 स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड जॉइनिंग इन. जस्ट क्विकली टेक योर अटेंडेंस स्नैपशॉट. या बोलो. तो अगर मिड होता तो 6 के बाद तो स्टॉप, जहाँ स्टॉप करना वो पॉइंट लिखना होता है ना, या फिर 3 ही लिखते? प्रिया, मैं यहाँ पे मिड लिखूं या यहाँ पे मैं सबस्ट्रिंग लिखूं या यहाँ पे मैं सबस्टर लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है. नाम अलग अलग हैं. जैसे अपर और यू केस 2 डिफरेंट नेम के फंक्शंस हैं बट उनकी वर्किंग बिल्कुल डिट्टो सेम होती है. उसी तरीके से सबस्ट्रिंग, सबस्टर एंड मिड, दीज आर 3 सेम फंक्शंस. द नेम इज ओनली डिफरेंस. इज दैट ओके? ओके सर. हाँ ठीक है. सो वर्किंग डिट्टो बिल्कुल एक जैसी है, नाम अलग अलग है. तो आप मिड लिखो, सबस्ट्रिंग लिखो या सबस्टर लिखो, सेम आउटपुट आएगा. गुड आफ्टरनून सर. हाँ गुड आफ्टरनून. ओके, सो आई जस्ट स्टॉप माय शेयरिंग हियर. ठीक है. Yes.